and I'd like to repeat myself here. I said that the Northeast is a unique region. It has many different types of languages, unique cultures, religions, tribes, and it is very important for us that the voice of the Northeast is understood and represented at the national level. And that is why we have created this committee of political experts, people who represent the Northeast. And it is my commitment as the Congress President to listen and respect the voice of this committee. We are not a party like the BJP that believes in imposing one idea and that is run by one person. I made it very clear in the meeting that I am here to listen. I am here to listen to all the different voices of the Northeast, and I respect all of them, regardless of which state they come from, how big they are, how small they are, it does not matter to me. I respect every single citizen of these states. These meetings will be held periodically. That is for you to decide how often you want to hold them. But it is also my commitment that every 2 or 3, 4 meetings, I will myself come and take part in these meetings and listen to what you have to say. I've also told Sangmaji that he should inform me of what was discussed in all the meetings so that we can inform the other members of the working committee and we can also have a sense of what is going on in this state. You are the backbone of the Congress party. Bloc presidents, district presidents, PCC presidents, you're the backbone. And frankly, without you, we would not be able to be successful. So one of the things that I mentioned to Mr. Sangma, mentioned to the 2 general secretaries, is that if we are going to have a meeting of the Northeast Committee, then I would also like to have a meeting of the bloc presidents and district presidents who represent our party in the state. So I'm very proud to be standing here in front of you. You are very important for us, and it is your voice, your feelings are very, very important to the AICC and me personally. You know what is going on in the Northeast, it is not a secret. There is an assault on the idea and the culture of each one of the Northeastern states. The RSS, BJP is determined to crush the spirit of the Northeast and to impose one vision, one idea on top of the people of the Northeast. They don't understand the Northeast. In fact, they don't understand anybody that comes from any of these states because this is an impossible thing to do. The Northeast will simply never tolerate this nonsensical ideology of Nagpur to be imposed on top of it. So not only do they disrespect you, they underestimate your capability. And you are going to show them in 2019 and as we proceed further in state after state, what exactly the spirit of the people of the Northeast and the spirit of these different states means, stands for, and how powerful it is. This attack is taking place on 3 or 4 different axes. Number 1, you already know the Citizenship Amendment Bill and a shoddily implemented NRC. And we made our stance very clear on both these issues. I said it in the public meeting today, and let me say it again, the Congress party opposed the Citizenship Amendment Bill, and it doesn't matter what anybody else says, doesn't matter whether X, Y or Z says that they were responsible for opposing the Citizenship Bill. It is very clear
It was the Congress party that stood for the Northeast and stopped this bill in its tracks. And I am proud to be part of the group of people who stopped it. And by the way, all of you are also responsible for it. Because without you, we would not have been able to stop it. So I'd like to compliment all of you for defending the Northeast and for fighting for the rights of the people of the Northeast. Now I'd like to speak a little bit about what are going to be the main issues in the 2019 election. There is a huge job crisis in the country. There is a massive agricultural crisis in the country. Youth simply do not have education. Mr. Narendra Modi is not bothered. He doesn't care about the farmers of the country. He does not care about the youngsters of the country or the Northeast. So two big issues: farmers and jobs for youngsters. In the Northeast, there is a specific issue of education for Northeastern youngsters. We want to make the Northeast a hub for job creation. So these are some of the ideas that the election is going to be fought on. Of course, the Citizenship Amendment Bill, the shoddily implemented NRC, these are all very important. Corruption is a huge issue. You're aware, I think somebody said the word Chaukidar. See, the moment you say Chaukidar, India responds by saying Chor hai. And I apologize to all the Chaukidars, it's not my fault, but we have unfortunately ruined some of their credibility also, because now anytime somebody says Chaukidar, the response is Chore. You know. So corruption is a massive issue, Rafael scam is a massive issue, giving 30,000 crore rupees to Anil Ambani is a massive issue. 3,50,000 crore rupees handed to 15 friends of Mr. Narendra Modi. I believe 5 airports have been given to Mr. Adani just yesterday. So the wholesale handing over of India's assets and resources to these 15-20 friends of his, that is a massive issue. So these are the things that you will be able to put in front of the people of the Northeast. I'd like to say a little bit in Hindi for the people of Assam and Tripura as well. इलेक्शन में 2019 के इलेक्शन में 2-3 बड़े मुद्दे हैं. एक रोजगार का मुद्दा है, वो नॉर्थ ईस्ट का मुद्दा है और पूरे हिंदुस्तान का मुद्दा है. मोदी जी ने मेक इन इंडिया की बात की और वो बिल्कुल फ्लॉप हुआ. हिंदुस्तान को नरेंद्र मोदी जी की सरकार 24 घंटे में 450 रोजगार देती है. तो एक रोजगार का मुद्दा, दूसरा किसानों का मुद्दा. हमारी सरकारों ने किसान कर्जा माफ किया. हमारी यूपीए की सरकार ने 70,000 करोड़ रुपए माफ किया. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक ने किसान का कर्जा माफ किया. नरेंद्र मोदी जी ने 3,50,000 करोड़ रुपए 15 उद्योगपति मित्रों का माफ किया है. किसान का माफ नहीं करते हैं. यहां पे नॉर्थ ईस्ट में स्पेसिफिकली सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल और जो एनआरसी को गलत तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ये 2 मुद्दे हैं. और कांग्रेस पार्टी ने अपनी पोजीशन साफ करी है. राज्यसभा में हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को हराया है. उनको मतलब हराया क्या हो, तो डर गए, वो आई भी नहीं. तो जो नॉर्थ ईस्ट का कल्चर है, जो आपकी भाषाएं हैं, उसकी हम रक्षा करेंगे, आपके साथ खड़े होंगे. और आपको यह नहीं लगना चाहिए कि एआईसीसी ये काम करे. एआईसीसी को शक्ति आपसे मिलती है. कांग्रेस पार्टी, आप लोग कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, और आप लोग कांग्रेस पार्टी का झंडा पूरे नॉर्थ ईस्ट में फैलाते हो, घरों में जाते हो. तो आप एक प्रकार से हमारी शक्ति हो. भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मुद्दा है. मोदी जी ने कहा था प्रधानमंत्री मत बनाओ, चौकीदार बनाओ. याद होगा आपको. आजकल कोई भी चौकीदार शब्द बोलता है तो जवाब मिलता है चोर है. मतलब बोलने की जरूरत नहीं पड़ती. जैसे आप बोलो चौकीदार, वो वहां से आता चोर है. हाँ. और मैंने अंग्रेजी में माफी मांगी कि देश के चौकीदारों से माफी मांगी कि मैंने उनके नाम पे सवाल उठा दिया.
मगर सचमुच में एक ही चौकीदार है जिसने चोरी की है, और उसके बारे में सब जानते हैं। 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी जी के जेब में डाले हैं राफेल मामले में। तो ये आपके सामने मुद्दे हैं। देखिए, 2019 का चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है, ये रियलिटी, और इसको कोई रोक नहीं सकता है। अब नॉर्थ ईस्ट में 25 सीटें हैं, 25 है ना? आप मुझे बता 25 में से कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कितने सीटें कांग्रेस पार्टी को दिलवाएंगे, ये बता दो मुझे। 25 में से 25 20+ seats I am expecting from Congress party in the Northeast, nothing less than 20+. And then after that, उसके बाद में भैया देखिए, यहां पे आपकी जो सरकारों को गलत तरीके से निकाला गया है, हटाया गया है, एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी की सरकारों को वापस लाना है। तो आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। यहां हमारी इससे पहले जो नॉर्थ ईस्ट कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें मैंने कहा कि हम नॉर्थ ईस्ट का जो सेंटिमेंट है, नॉर्थ ईस्ट की जो अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, धर्म हैं, इन सब को हम रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, इनकी आवाज सुनना चाहते हैं। और मैंने उस मीटिंग में बधाई दी कि नॉर्थ ईस्ट के सब स्टेट्स के सीनियर लीडर्स उस कमेटी में हैं, और जो नॉर्थ ईस्ट की एक प्रकार से जो आत्मा है, जो स्पिरिट है, वो उस कमेटी में शामिल है। तो मैं आप सबको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। अब चुनाव का समय है, आप नफरत से मत लड़िए। बीजेपी बांटने का काम करती है, नफरत फैलाने का काम करती है, आप जोड़ने का काम करते हो, भाईचारे की बात करते हो, प्यार की बात करते हो, और अंत में हिंदुस्तान में भाईचारा, प्यार नफरत को हराता है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, और चुनाव में पूरा दम लगाकर, आपने 20 कहा, बट 22 से ज्यादा सीट लेनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।